Good morning, children. Open your new Sparkle semester series, Junior KG Semester 1 book. Last video, we have already learnt capital P. P for parrot, P for puppy, P for pot. Alphabet review, that is MNOP. MNOP. And also we have completed capital letter Q. Q for queen, Q for quiver, Q for quill, Q for quill. Now we will come to the new alphabet, that is R. That is R. R for reddish, R for reddish, R for ring, R for ring, R for rat, R for rat. Okay. Now see here. How to trace the lines to complete the pattern. To complete the pattern. See here. Put one straight line in this way. Just go on putting one straight line. And then do this way. This way you have to write. Then write the letter R. Read and write. R for reddish. R for ring. R for rat. R for rat. R for reddish. R for ring. This way you can read and write. Write the full page. Complete this all. See here. This way you have to write. R. Okay. After completing this, you go for your 4-line book, and in that you write R for rabbit also will come. R for rabbit also will come. Okay. R for reddish, R for ring, R for rat, R for rat, R for reddish, R for ring, R for rat. In the same way, you go on writing your 4-line full page you have to write. Have you understood? R for reddish, R for ring, R for rat, R for rabbit also will come. Okay. Not only these 3. Again you can say R for rabbit, rat, R for rat, rabbit, ring, reddish, red color also will come. R for red color. Okay. In this way you have to read and write. Full 1 page. So, write R 2 pages. Till Q we have already completed. We have completed till Q. No? Q we have completed till Q. Now we completed R also. Now we will come to the new alphabet. One more new alphabet. That is S. See here. S for snail. S for snail. S for sun. S for sun. S for seal. S for seal. Yes or no? Seal. So, this one seal is an insect. ये एक इंसेक्ट है. ये सन तो तुम्हें पता है. अभी सन आया है ना. आकाश में सन बाहर आया है. तापमान बढ़ गया है. धूप देती है हमें सन. और ये सील एक क्या है? एक्वा एनिमल है. ये पानी के पास रहता है. ये इंसान को भी खा जाता है. अगर गुस्सा आया ना, ये इंसान को भी खा जाता है. इसको मैमल भी कहते हैं. इसको ये एक्वा एनिमल है. पानी में रहता हुआ एनिमल है. ओके. सो S for snail, S for sun, S for seal. S for seal. तो
तुम्हें अब ट्रेस द लाइन्स टू कंप्लीट द पैटर्न, ट्रेस द लाइन्स टू कंप्लीट द पैटर्न। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, देखो इस तरह से हाफ सर्कल देना है, इस तरह से, इस तरह से हाफ सर्कल करके तुम्हें करना है। ये सीधा कर दिया, इसको अब तुम्हें इस तरह से उल्टा करना है। ये देखो ऐसे उल्टा करके लिखना है, देखो ऐसे, देखो इस तरह से तुम्हें करना है। ये करने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें राइट द लेटर एस, राइट द लेटर एस, सीयर, व्हाट टू रीड एंड हाउ टू राइट सीयर। एस पहला तुम्हें हाफ ऐसा देना है, फिर इसको नीचे घुमा के ऐसा देना है। एस फॉर स्नेल, एस फॉर स्नेल, एस फॉर सन, एस फॉर seal, S for seal, S for sun, S for snail, snail। इस तरह से तुम्हें घुमाकर लिखना है। देखो इस तरह से तुम्हें कंप्लीट करना है। क्या बोलना है तुम्हें, S for snail, S for sun, S for seal, S for seal, again you have to write S for sun, S for sun and S for snail। इस तरह से तुम्हें बोलकर लिखना है। अभी जो तुम्हें ये स्नेल जो ये सील जो दिया गया है, ये सील देखो यहाँ पे पिक्चर दिखा रहा है, इसको तुम्हें ये डॉट के ऊपर से तुम्हें ऐसा कंप्लीट करना है, इसको आउटलाइन देना है पेंसिल से, इस तरह से, इस तरह से। फिर तुम्हें इसको कलर करना है, घर पे कलर करना है। दिस एस आई हैव गिवन यू रीड एंड राइट। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, आफ्टर कंप्लीटिंग इन योर दिस टेक्स्ट बुक, यू हैव टू राइट इन योर 4-line बुक। देखो यहाँ पे एस कैसे लिखना है, दिस इज योर बुक नो 4-line बुक। एस फॉर स्नेल, एस फॉर सन, एस फॉर सील, S for seal, S for sun, S for snail। इस तरह से तुम्हें लिखना है। ये मैं यहाँ पे खाली ऐसे 2 लाइन लिखूँगी, तो तुम ऐसे 2 लाइन मत लिखो, पूरा पेज लिखना है तुम्हें, 2 पेज। यू हैव टू राइट फॉर 2 पेज, 2 पेजेस यू हैव टू राइट। देखो S for sun, S for snail, S for seal। कुछ भी बोल सकते हो तुम बीच में, S for seal, S for sun, S for snail। ऐसे तुम्हें फुल पेज लिखना है, फुल पेज लिखना है तुम्हें। पढ़ो और लिखो। अब तक तो मैंने तुम्हें A से लेकर S तक पढ़ाया है, तो अब पढ़ो। A for arrow, A for axe, A for apple, B for ball, B for bell, B for bat, C for cat, C for cake, C for cap, D for doll, D for door, D for duck। अल्फ़ाबेट रिव्यू A B C D, A B C D। तो तुम्हें इसको अल्फ़ाबेट्स पिक्चर के हिसाब से लिखना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देन E for egg, E for engine, E for elephant। Then F for frog, F for fan, F for fish, G for gun, G for gum, G for grapes, H for hat, H for hut, H for hen। ये अल्फ़ाबेट रिव्यू भी तुम्हारा हो गया है। EFGH पिक्चर के हिसाब से हमने अल्फ़ाबेट लिख दिया है। देन I for ink pot, I for insects, I for igloo, I for igloo, J for jam, J for joker, J for jug, J for jug। Now here K,
K for key, K for king, K for kite. L for lotus, L for lion, L for leaf. And you have to color all this. ये तुम्हें सब पिक्चरों को जो तुमको बोला ये ऑलरेडी, ये तुम कलर करो. अल्फ़ाबेट रिव्यू. IJKL, IJKL. इसको भी हमने पिक्चर जो मिसिंग है विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर हमने लिख दिया. IJKL. Okay. Now M for mat, M for mat, M for monkey, M for monkey, M for mango, M for mango. Now N, N for net, N for nest, N for nail polish, N for nail polish. O for octopus, O for ostrich, O for orange, O for octopus, O for ostrich, O for orange. P for parrot, P for parrot, P for puppy, P for puppy, P for pot, P for pot. This is alphabet review MNOP. With the help of the picture, we have completed. Now, Q for quill, Q for quiver, Q for quiver, Q for quill, Q for quill, Q for queen, Q for quiver, and Q for quill. R for radish, R for radish, R for ring, R for rat, R for rat. This is yes. This is S for snail, S for snail, S for sun, S for sun, S for seal, S for seal. You have to color this one and write. R 2 pages homework, S 2 pages homework, and then A to S 2 pages. A to S. Have you got it? So you write A to S. मैंने तुम्हें अभी A to S तक पढ़ाया है ना, तुम यहाँ पे पढ़ कर लिखो. A, B, C, D. This is your 4-line book. ये 4-line book में तुम्हें लिखना है. A, B, C, D. Then what comes? E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, O, Q, R, S. तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया है ऑलरेडी नो. सो तुम अभी इसको पढ़ भी सकते हो. A for apple, B for ball, C for cat, D for door, E for elephant egg, कुछ भी बोल सकते हो. F for fan, G for grapes, goat, कुछ भी. H for horse, H for house, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sun. कुछ भी बोल सकते हो. सन भी बोल सकते हो, सील भी बोल सकते हो. Now, if your parents ask you to read any alphabet in the middle,
any alphabet you have to read, because daily you are reading now, daily you are writing. Yes or no? If they ask you to read any alphabet or to write, if they ask you to write C, if they ask you to write A, if they ask you to write D, write D. If they ask you to write B, write this way. You don't stop anywhere. You must, as soon as they tell you, no, you should go on writing. Okay. If they ask you to write now E, then G, then I, then O, in this way. If they ask you, you have to write. Will you be able to write now, children? You are able to recognize what is this? A. Very good. This one D. This one B. This one C. Yes. E. G. I. O. I have not written A, B, C, D. I have given middle any number, any alphabet. Any alphabet I have given you. Okay. Now your homework will be, children, that is R. This is homework for you. Homework. R will be 2 pages. S will be 2 pages. A to S 2 pages. This is the homework for you. Read and write with the picture book. With the picture book. This book now I have already showed you how to read. In that way you too also read and write. Read R for whatever comes, S, then A to S you read. A for apple, B for ball. In this way just go on reading. Okay children, thank you. We will meet in the next video.